Hello friends, today in this class we are going to learn about the solutions for part B of CEED. CEED or the Common Entrance Examination of Design. Friends, this is the kind of examination where they will ask you, बता, इसमें से पिकासो की पेंटिंग कौन सी है? तो फिर ये बता, इस सॉलिड में कितने सरफेसेस हैं? इसने सही आंसर दिया है, आगे भेजो उसको. Today we will discuss the selective questions which were already prepared within the given timeline. Part B consists of 5 different questions जो कि based हैं sketching, creativity, form sensitivity, visual sensitivity और problem identification पर. So, let's start. So our first question is also my favorite question and it belongs to the exam paper of 2020. It is from the sketching part and the question is telling us that Gauri is a fisherwoman from Versova, Mumbai. She sells fish at the same spot every day on the dusty pavement along the main road. She gets upset and angry when someone takes her spot. She does not like it when customers bargain with her. Given the character design of Gauri as above, sketch the following. First is Gauri sitting at her spot and impatiently waiting for customers. Second, she uses a towel to chase away the flies. She hates them sitting on the fish. Third, Gauri very angry at the customer, and here it is already mentioned that we do not have to draw the customers. The additional instructions are telling us कि हमें किसी भी तरह का कलर या रूलर या कंपास यूज़ नहीं करना है. हमें सिर्फ पेंसिल की मदद लेते हुए ड्रॉ करना है. फिर आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. ये वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपकी ड्राइंग स्किल्स को जज किया जाएगा. फर्स्ट वन इज़ द एबिलिटी टू कीप द कैरेक्टर कंसिस्टेंट, जिसका मतलब है कि आपको कैरेक्टर को शुरू से आखिर तक ऑलरेडी दिए हुए फिगर के फीचर्स से सिमिलर रखना है. द सेकेंड वन इज़ एक्सप्रेशन एंड बॉडी जेस्चर ऑफ द कैरेक्टर, जिसका मतलब है कि आपको एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की डिटेल्स पर खास ध्यान रखना है. एंड थर्ड पॉइंट इज़ फाइनल लाइन क्वालिटी एंड फिनिश ऑफ द ड्राइंग, जिसका मतलब है कि फाइनल की हुई ड्राइंग्स की लाइन क्वालिटी और फिनिश बिल्कुल क्लियर, नीट और अपीलिंग होनी चाहिए. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी अ क्रिएटिव इंसान तो ये इन्फॉर्मेशन रीड करने में और समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. Here is our first solution in which you can see scene A and scene B. Talking about the scene A, you can see Gauri's expression. She is looking towards the left of her vision and she is waiting for the customer impatiently. Her lips are little lifted as she is quietly waiting. If you look at her feet, it is facing the same direction as her face. Talking about her hand gesture, her left hand is resting on her left knee and from her right hand she is chasing the flies with the help of a towel. The next thing is that you can use these marks to show the motion of the towel. You can draw 3 to 4 flies moving away from the fish tokery that consists of 3 fishes. Also, I have drawn this carpet on which she is sitting. I also wanted to draw the footpath as mentioned in the question, but at the same time, it is mentioned that we do not have to draw the environment around the character. Coming to the scene B, we can clearly see that Gauri is getting angry and she is arguing with somebody, standing to the right side of her vision. Also, this time I have made her feet facing the same direction of her face. Her right hand is raised and she is raising her index finger as a sign of 1. And from her left hand, she is pointing towards the fishes. जैसे कि वो कह रही हो, एक ही प्राइज़ है
लेना है तो खरीद लो। सिमिलरली मैंने इस क्वेश्चन को दूसरी बार सॉल्व किया, जिसमें कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज अलग है। जिसके पहले सीन में गौरी अपने टाल की मदद से फ्लाइज को चेस कर रही है, और दूसरे सीन में शी हैज़ पैक्ड द फिश इनटू पॉलीथीन एंड इट इज़ लुकिंग लाइक फिश को पैक करवाने के बाद कस्टमर ने बार्गेन के लिए कहा होगा, एंड फ्रॉम हर राइट हैंड शी इज़ टेलिंग द कस्टमर टू गो अवे। देन आई सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम, एंड दिस टाइम सीन बी में मैंने गौरी को फिश काटते हुए दिखाया, एंड दिस टाइम कस्टमर ट्राइड टू बार्गेन बिफोर कटिंग द फिश, एंड गौरी इज़ एंग्री। मानो वो कह रही है कि तुमको इसी रेट में ख़रीदना है तो बताओ, फिर उसके बाद ही फिश के पीसेस किए जाएंगे। प्रैक्टिस टिप्स। You can use this character apart from the quotient for practice and could make Gauri in different scenes, like this one, where Gauri is extremely angry on a customer and she ripped the sleeve of the customer. Two boys are holding her arm from behind. Or like this one, where she got angry and became so big and horrifying, and the customer is stopping her from doing this. Now, you could understand that why this quotient is my favorite, because I experimented with this quotient by keeping the character consistent. Coming to the next quotient. This quotient belongs to the quotient paper of 2025, and it is based on visual sensitivity. The quotient is telling us कि नीचे दिए गए 4 पिक्चर्स में जो एनिमल्स हैं उन्हें इंडिया के एक चिड़ियाघर ने एक्वायर किया है, एंड दीज एनिमल्स आर इंडियन ग्रे मंगूस, हनी बैजर, इंडियन बाइसन एंड इंडियन पेंगोलिन। तो अब जो चिड़ियाघर की टीम है वो चाहती है कि सभी एनिमल्स को जिस जिस जगह पर रखा गया है उन सभी जगह पर इनके इंडिविजुअल साइनेजेस हों। Signages are public display signs. Now we have to create 4 different icons to indicate these animals using only black color. All icons should be clear and visible and must have a consistent visual language. We have to draw the icons in the provided 4 squares in the answer booklet. And the evaluation criteria is: first one, consistency in the visual language, कि उन सभी की पहचान एक सी हो। सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनिमल्स, कि एनिमल्स और आइकन्स सिमिलर हैं। थर्ड वन इज विजुअल कंपोजिशन, क्या उनके फीचर्स और आइकन्स एक्चुअली सेम एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। फोर्थ वन इज क्लैरिटी एंड नीटनेस, कि फाइनल की हुई ड्राइंग्स नीट और क्लियर हैं। Here are the drawings. First one is for the Indian grey mongoose. Second one is for the honey badger. Third one is for the Indian bison. And the fourth one is for the Indian pangolin. Now we can clearly see that all these 4 icons are very thick and bold of black color. Mongoose की जो body है वो black है, लेकिन इसके chest, ears, eyes और mouth white हैं to differentiate. Similarly, जो honey badger icon है उसमें भी we can see a white stripe over a complete black body. वैसे ही bison is all black and the light reflecting areas are white. While creating the pangolin, make sure to put details in these curves of overlappings on its body. Because of this boldness, they belong to the same group or similar kind. Coming to the next question, and this question is being asked in 2025. It belongs to form sensitivity. According to the given information, the question is telling us that shown on the left is character-based design of a product. Inspired from this product, reimagine, conceptualize and render the tea flask. Given on the right, make it clear and visible. Now if you see that there is a little confusion
in the respective question. The entire sentence is defining the product in the left, and it is not clearly mentioned कि आपको लेफ्ट प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर टी फ्लास्क को रीडिज़ाइन करना है या फिर आपको राइट फिगर को लेकर ही उसे क्रिएटिवली यूनिक डिज़ाइन देना है. And this question would be taken differently by different individuals. So I have decided to go with the idea to redesign the tea flask individually. And here is the evaluation criteria. First one is characterization of the product. कि जिस तरह का कैरेक्टर इस प्रोडक्ट को हमने दिया है ये उस कैरेक्टर को रेफर करता है या नहीं. Second one is relevant details and usability. कि दिए गए डिटेल्स और फीचर्स यूजेबल हैं या नहीं या फिर सिर्फ प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स को एनहेंस कर रहे हैं. थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ स्केचिंग कि प्रोडक्ट की फाइनल स्केच क्वालिटी कैसी है. एंड फोर्थ वन इज शेडिंग एंड रेंडरिंग, फाइनल ड्राइंग्स विद रिक्वायर्ड शेडिंग और रेंडरिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द फॉर्म closely and carefully so that we could understand the proportion and usable parts of the given product, which are cap, handle, spout from which the liquid is poured, and the body vessel which contains the liquid. When I saw the product, it reminded me of a big elephant because of its fat body design. Now, if we compare the product with the elephant, we could see the lower body is similar to the flask. Keeping the proportions in the mind, we will start working on the product's aesthetic and will make it look like similar to an elephant in a usable manner. So, let's start. This is the given product and this is the proportion. Here is the first drawing based on the proportion. First, I erased the spout and made a new spout, which looks like elephant's trunk. Then I erased the cap and made a new cap, which would go with the aesthetics. Then I draw a ear-shaped joint which is attached with the handle, and here is our final line sketch. This is how it will look after shading few areas. And here is our final design of the new tea flask, which is inspired from the elephant. Looking at the next question, which is been asked in 2024, and it is based on form sensitivity. Here the question is telling us that, inspired from the given three-dimensional form, conceptualize, sketch and render a single-seater furniture for a living room. We can see that the given form is looking similar to a big tire tube or a swimming pool ring. And evaluation criteria is, first one is consistency with visual language of the form, कि visual form को consistent रखा है. Form should complete function, कि final form अपनी functions को fulfill करती है या नहीं. Third one is relevant details of the product, कि प्रोडक्ट की डिटेल्स एक्चुअल फॉर्म से और न्यू डिज़ाइन से रिलेवेंट है या नहीं. फोर्थ वन इज सरफेस शेडिंग, कि फाइनल ड्राइंग्स की सरफेस शेडिंग ज़रूरत के अकॉर्डिंग ठीक हो. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. हियर इज द फाइनल ड्राइंग, which is a single sitting furniture and its shape is similar to the given tube. Also, I have added a pillow to enhance the entire design. For the solution of another two questions, see you in the next part.